Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will do determiners. Now think, write a cross sign where the words are incorrect. Number 1, I bought trousers at the shop. Buddha taught people. Books, are you reading? He gave detailed explanation of stories. He distributed chocolates to students. We are known for role in pollination. Do rewrite the improper sentences of think section correctly below. Now read. Determiners are words that come before a noun to help us tell more about them. Determiners क्या होते हैं? जो noun से पहले आते हैं और हमें help करते हैं कि हम उनके बारे में और कुछ जान सकें. Examples: the best boy, my mother, that house, every teacher. Determiners can be used as per their agreement to the nouns they clarify. Singular nouns always need a determiner. जो singular noun होगा उसमें हमेशा determiner हम use करेंगे. Example: that book is Raju's. Book and that is determiner. That book is Raju's. Here book is singular noun. The tells which book. While plural nouns do not always need a determiner. अगर noun plural होगा तो हमेशा ही हमें determiner की requirement नहीं होती. Example: fans made a big noise. Here noun fan doesn't need a determiner to specify it. In the phrases above, the, my, that, every are determiners. Determiners are generally classified on the basis of the functions they perform. उनका क्या फंक्शन होता है सेंटेंस में, वो क्या काम कर रहे हैं, इसके बेस पर डिटर्मिनर्स को क्लासिफाइड किया जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. नंबर 1, डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर्स लाइक 1, 40, फर्स्ट, 2/5 एटसेट्रा. सेकेंड, इंटेरोगेटिव्स जिसमें हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं. हुज, व्हाट, विच. नेक्स्ट इज क्वांटिफायर्स जिसमें क्वांटिटी का पता चलता है. सम, मच, फ्यू, एवरी, मैनी, अदर एटसेट्रा. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव्स लाइक आइदर, neither, both, all, each, every, etc. Now next is articles. The, and, a. Next is demonstratives. This, that, these, those. And next is possessives. His, her, our, their, my, etc. जिसमें क्या पता चलता है कि कोई भी चीज किसकी है. Articles. Articles are words that let us know if the noun is singular or point at the particular person or object the sentence is talking about. Articles क्या होते हैं? जो हमें ये बताते हैं कि जो नाउन है वो किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में है या किसी पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट आउट कर रहा है. एग्जाम्पल्स: अ मैन अप्रोच्ड अस टू आस्क फॉर डायरेक्शन. द मैन क्लाइंबिंग नियर बाय सॉ द एक्सीडेंट. नेक्स्ट इज possessives. Possessive determiners or possessive adjectives tell us who owns something. They are used before a noun to show who owns the noun we are talking about. Possessive जो determiners है वो हमें क्या बताता है कि कोई भी चीज या कोई भी आर्टिकल किसका है, कोई भी चीज किसके बिलोंग करती है, किस चीज के बारे में बताया जा रहा है. Examples: Our school will be taking us to Udaipur this year. I gave my books to the new girl yesterday. Next is
demonstratives. Demonstratives are words that refer to the person or objects close by or at a distance. They are demonstrative pronouns. जो demonstrative pronoun होते हैं वो हमें क्या रेफर करते हैं कि कोई भी person या object पास में है या दूर में है, और ये जो होते हैं ये they are demonstrative pronouns. Examples: these books contain all the information we need for the project. That car belongs to my neighbor. Next is quantifiers. Quantifiers are words that come before countable or uncountable nouns. They are used when we want to give information about the number of people or objects, how much or how many. जो quantifiers हैं वो क्या बताते हैं कि कितना नंबर में या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है या कोई भी चीज़ है उसका नंबर कितना है. ये ज़्यादातर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स: आई गेव हिम few chocolates. We have enough petrol to reach New Delhi. Some students brought their calculator to school. Next is distributives. Distributive determiners are words that tell how something is divided or distributed among a group of people or things and to individual members of the group. जो distributive determiners है वो आपको ये बताएगा कि कोई भी चीज़ किसके बीच में डिवाइड की गई है, कोई ग्रुप के बीच में डिवाइड करी है या इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप है उनको दिया गया है, उसके बीच में इसको शो किया जाता है. एग्जाम्पल्स: neither students were selected by the school council. Every child needs to play in the evening. Next is interrogatives. Interrogative determiners are words used to ask questions. Words like what, which and whose are used before nouns to ask specific information about people or things. जो interrogative determiners है वो कहाँ यूज़ करते हैं हम, जैसे हमें क्वेश्चन पूछना हो, कौन है, क्या है या किसके लिए है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें किसी भी पर्सन के बारे में लेनी है तो हम इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल: हुज शूज डिड यू बोरो येस्टरडे? व्हाट मूवी वुड यू लाइक वॉच? डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर्स. डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर्स आर वर्ड्स और नंबर्स दैट अपीयर बिफोर अ नाउन. जो डिटर्मिनर्स ऑफ नंबर हैं वो नाउन से पहले हमें अपीयर होते हैं. नंबर 1, कार्डिनल नंबर्स आर यूज्ड as determiners to tell us the quantity of object or people. जो कार्डिनल नंबर हैं वो ऑब्जेक्ट या पीपल की क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं. एग्जाम्पल: द स्टूडेंट्स विल रिसीव 5 पैकेट्स ऑफ नूडल्स ड्यूरिंग द कैंपिंग ट्रिप. वी विल बी देयर इन 5 minutes. There are 25 students in 5th grade. Next is ordinal numbers are used as determiners to tell the sentences. Example: the first few minutes of the movie are the most interesting. We won the second prize in the elocution competition. Predeterminers, central determiners and post determiners. Sometimes we use more than one determiner before the noun. कभी कभी क्या होता है, नाउन से पहले हम एक से ज़्यादा डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं. नाउ डिटर्मिनर्स बाय पोजीशन. नंबर 1, प्री डिटर्मिनर्स. नंबर 2, सेंट्रल डिटर्मिनर्स. नंबर 3, पोस्ट डिटर्मिनर्स. एग्जाम्पल: आई चेक माई फोन 3 times every day. Mom calls me every 5th day. Our class collected 10 times more the amount needed for the Red Cross. Any determiner can be used in a sentence without the others to accompany it before the noun in a sentence. Predeterminers. Predeterminers are used to tell the number of the nouns. They are used in following ways.
जो प्री डिटर्मिनर्स हैं वो हम क्यों यूज करते हैं? नाउन के नंबर को बताने के लिए। टू शो ग्रोथ ऑफ एक्सप्रेशंस, दैट इज शोइंग द अमाउंट एक्सप्रेशन एंडिंग इन द फॉलोइंग वर्ड्स ट्वाइस टाइम्स, 5 टाइम्स, once, etc. Examples: to break the Guinness dancing record, we need twice the dancer on the stage. You have visit the dentist 3 times a week for the braces. Second, to express the word that is stand for denoting fractions like 1/3, half, 3/4. Examples: for the perfect cake, add 1/3 cup of castor sugar and stir briskly. She finished half the porridge before everyone returned. Next, to express the entire amount with words like both and all. Examples: you should read both books to write a review. All students participated in the annual concert. Sometimes predeterminers are also used to express emotion like surprise, disappointment, pleasure, or other emotions with words like such, what, rather, quite. कभी कभी such, words, rather और quite जो इस तरह के जो इमोशंस होते हैं उसमें भी जो है हम प्रीडिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं। इसमें हम कौन कौन से इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं? सरप्राइज का, डिसअपॉइंटमेंट का, प्लेजर का। अगर हम इस तरह के इमोशंस को सच, व्हाट, रेदर, क्वाइट इन वर्ड्स के साथ यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या है? इसके लिए भी कभी कभी प्रीडिटर्मिनर्स का यूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल: इट वॉज क्वाइट अ नाइस सरप्राइज, इट इज़ सच अ लवली डे। Predeterminers do not occur before the noun. Only one determiner is used at a given time. Examples: you have visited the dentist all 3 times a week for the braces. You should read both half books to write a review. Next is central determiners. Central determiners are words which appear in the middle with predeterminers in front and followed by postdeterminers. They can be articles, possessive, demonstrative, interrogative determiners और quantifier. जो central determiners होते हैं वो कभी कभी कहाँ हमें appear होते हैं? predeterminers के सामने और followed किससे होते हैं? postdeterminers से। वो articles भी हो सकते हैं, possessive भी हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिफायर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स: इन द लाइब्रेरी ऑल द बुक्स आर स्टैम्प्ड, यू शुड रीड हाफ अ चैप्टर फॉर द टेस्ट, डोंट प्ले ऑल योर टाइम, सेट ऑल 3 प्रॉब्लम्स एंड स्टार्ट प्लेइंग। नेक्स्ट इज पोस्ट डिटर्मिनर्स. Post determiners follow the central determiner. More than one post determiner can be used in a sentence. जो post determiner होते हैं वो central determiner को follow करते हैं और हम एक sentence में जो है एक से ज़्यादा इनको use कर सकते हैं. Example: the next time we meet. There are 4 types of post determiners. जो post determiners हैं इनके 4 types होते हैं. Number 1, cardinal numbers like 1, 2, 3, 100 and 30, 5, etc. Examples: here the 10 boys who won the match. The 300 days of the journey have become tiring. Next is ordinal numbers: 1st, 2nd, 10th, etc. Examples: the first prize goes to Radha. On the 10th day, we all sang songs. Next is general ordinals: last, next, previous, subsequent, etc. Examples: during the next week we can have a surprise test. The last bench students should stand up and recite. Next is quantifiers: a few, a little, least, many, much, most, other, etc. Examples: it's a must for all girls to wear ribbons. We have a little time left for practice.
नाउ टेल द करेक्ट डिटर्मिनर फ्रॉम द ऑप्शन। आपको इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट डिटर्मिनर है उसको चूज करना है और बताना है। एलिसन, हेलो, दिस दैट देयर इज एलिसन, फुल स्टॉप। इज दैट यू देयर सैली। एलिसन आप क्वेश्चन पुट अप कर रही है तो यहाँ आपको जो करेक्ट डिटर्मिनर है उसको यूज करना है। हेलो, दिस इज एलिसन, इज देयर सैली। इसमें जो करेक्ट डिटर्मिनर है फर्स्ट में वो है दिस, हेलो, दिस इज एलिसन। और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है तो क्या आएगा, इज देयर सैली, राइट। अब इस तरीके से आपको जो बाकी के सेंटेंसेस हैं उसमें जो करेक्ट डिटर्मिनर है उसको पॉइंट आउट करना है। आई होप डिटर्मिनर्स आपको क्लियर हुए होंगे। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज, you have to do by yourself. The whole exercise you have to practice it.